Thanks for taking this and spending your Friday evening with us. So, thank you. And this is probably, I think, uh, 20, probably 20 plus such episodes I've done. And one of the reasons why I do these fireside chats is because I love to talk with fellow traders, and more the idea is to discuss aspects around psychology, aspects around their thought process, what have they gone through, what have they learned, and the idea is more to discuss that. And space being a audio only medium, I think it's sort of is a perfect medium to discuss aspects around psychology, because we really don't need any charts or anything to show in terms of strategy and all that. So, Vivek, thank you again for joining me, and we obviously have been interacting. So I wanted to really do this for a long time. So welcome, Vivek. Thank you, Gordon. Thank you so much. It's a pleasure for me as well. Great. So, Vivek, the way we will do this is maybe for the first 15-20 minutes we'll keep this between ourselves. I have a few questions that I have drawn up, and maybe after that we'll open it up for the audience round. To see what kind of questions people want to ask and know from you. So, with that, Sure. yeah. So with that, let me begin by asking you, Vivek, if you could give a little background about yourself in terms of where are you originally from, and your educational background, little bit before we jump onto the trading and how you got introduced to the stock markets. A little personal side about you would be helpful. Sure. Uh, so where I belong from, I'm from Manoharpur. Manoharpur is a small town in Jharkhand, and since there were no very good schools over there, so my schooling was at various places, all mostly in Jharkhand, Odisha, these places. So I have been in Jhumri Tilaiya. I think most people have heard this name only in the songs or in jokes. Yes. It is a real place, and there's a Sainik school over there. So I studied about 4 years in Sainik school, then moved to Okay. Devghar. We know it as Baba Badnath Dham. I Hmm. was there for 3 years, and then moved to another place which you have heard only in movies, and in the movie Dhoni. Its name is Hmm. Bandamunda. So it is also a real place. It is the next station to Rourkela. Rourkela is more Okay. known place because of the steel city. Yes. So I have been there Yes. for 2 years, and then I studied 2 years in Rourkela. So this way, I kept moving from one place to another, keeping adjusting to the people. So the art of adjustment, I'm now bringing Hmm. into my option trades now. Just joking. So after that, I did my 12th from Rourkela, and then moved to Jamshedpur, where I was preparing for entrance exams, engineering. Did my engineering from Bhubaneswar. After engineering, I did my engineering in electronics and telecommunication, and then I went to Gurgaon for the job. And then there itself, I started preparing for MBA, and got into IIM Indore in the first attempt. That was more of luck. I still say everyone that it was more of a luck thing that happened. So yeah, after that, got into Goldman Sachs. Was there for 2 years again in Bangalore. Then moved to Mumbai. Since I moved to Mumbai in 2016, and since then I am in Mumbai only. I was working with Reliance Industries earlier, and in 2020, July 2020. So it's like almost 2 years. For the last 2 years, I'm into full time trading. Uh, Okay. yeah. So that's basically a So, small. Yeah. so how many crores has Mukesh bhai given you to manage? Nothing. Nothing. Not. Mukesh Bhai have better people who keep
fighting on the Twitter about 30 crores and 50 crores. So I'm a Okay, small okay. fry in that sense. No, no, I'm sure there will come a day when you will manage his money also. So, yeah, but okay, cool. I got it. So tell me one thing. Okay, so you completed your engineering, your IM, and you worked in corporate life, and you have been now trading full time since. Come again? How many years did you say? So full time trading is for last 2 years. Last 2 years. Okay, okay. Yes. And what was your motivation to become a full time trader? As in, was it a push factor from the job, or is more of a pull factor towards trading as a I passion? I mean, always I what? I always wanted to do that. So Hmm, the one of the reasons why I did my MBA is this, that I was so much into trading that I always wanted to make a career in finance. After a point, hmm, obviously, when I was doing my engineering, I had no clue. Engineering was not hmm, my choice, but it's like, if you are bright, you have done well in your 12th, 10th, and 12th, then it's kind of accepted that you yeah, will go into engineering or you become a doctor or something. So that right. was something which and a lot of people ask that अगर MBA ही करना था तो engineering क्यों की? The point is very simple. We are clueless at that point Hmm, of time. We hmm, are we are not very sure of ourselves. We have not seen the world. So yeah, it's not that the parents are always imposing. The parents are trying to be helpful. Okay, yeah, yeah, they talk to a lot of people. They try to find out that what he can do, because they have not see, there are parents who have seen a lot of world themselves, so they know that hmm, what is the best, what hmm, at least what are the options. But in our yeah, background, our parents have also seen very limited, in terms of academics. They have a very limited options that they have gone hmm, through. So जो भी उनको ऐसा लगता था कि नहीं yeah, ये शायद इसके लिए सबसे अच्छा होगा, they will suggest that, and they will and so that it was like that. So I took engineering within yeah, yeah, 1 or 2 months down the line. I knew that this is not my cup of tea. But anyways, again, hmm, we were since engineering शुरू तो कर दी, तो अब वो खत्म तो करनी है. तो इंजीनियरिंग कर ली. इंजीनियरिंग करने का जॉब जरूरी था, hmm, जॉब कर लिया. जॉब करते करते एक्चुअली मेरे बड़े भैया हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो hmm, उनके उनकी वजह से मार्केट का बुखार थोड़ा लगा. ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू द मार्केट्स. hmm, एंड एक बार hmm, जब वो hmm, लगा, तो उसके बाद आई वाज अर्लियर मोर ऑफ अ फंडामेंटल एनालिस्ट काइंड ऑफ. उस तरह का इंक्लिनेशन था. सो hmm, काफी hmm. कंपनीज के बारे में स्टडी करते रहना, ये सब कुछ चलते रहता था. एंड Right, इवेंचुअली right. फिर No, धीरे धीरे see, धीरे धीरे करते करते अब ये समझ आ गया कि अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल्स देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल. और इवेंचुअली आपको hmm, मूव करना पड़ता है टू सी द मार्केट एज प्योर मैथ्स rather than pure maths. hmm, Some hmm, people will call it as a probability game. So जितना आप hmm, मार्केट को मैथ्स की तरह देखने लग जाओगे, उतना मार्केट के साथ डील करना आसान हो जाएगा. आई एम नॉट सेइंग कि पैसा बनाना बहुत आसान हो जाएगा. पैसा right. बनाना कभी भी आसान नहीं होता है. बट मार्केट के साथ डील करना Hmm. आसान हो जाएगा थोड़ा. Exactly, exactly. In fact, I was saying the same thing that, rather, I was going to say the same thing that, see, you don't have to sound sort of apologetic about that you became an engineer. Actually, the point is, it's see, beyond the point, the degrees don't matter whether you're engineer, chartered accountant, or whatever. I think what really matters is all this education just sort of helps you evolve as a personality. Okay, it gives you worldly knowledge. It sort of makes you think better. So I think ultimately देखो, whether it is you, me, we are all neither of us, at least neither of you and I, are fundamental analysts or economists. So we are essentially trading purely with the help of maths.
whether it is investing, whether it is option selling, whether it is whatever, we are heavily relying on maths. So I think what this all education does is basically make you a better thinking person. True, right, right. Yeah. Yeah, I agree. Okay. So with that, you wanted to do full. So tell me a little bit about your journey as a full time trader. I mean, what have you been doing? Like, are you did you when you started off? In fact, not just as a full time trader, but even as a normal trader, even when you were doing part time, what did you start off with? Did you start off initially with equity, cash segment, and then slowly move to FNO, or how was your journey? Okay. And within FNO, where are you, primarily doing your trading? Is more on options, futures? So give a little bit idea of your overall trading framework. What do you do, and what do you not do? Okay, so how it started? It started like I got introduced to the markets. I know that people can make money over there, and उसमें ये था कि first obviously started with equity trading. I placed my first order on 21st June 2010. Okay, so it's like 12 years Hmm. back when I Hmm. purchased my first share. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम Hmm. ऑब्वियसली कुछ भी पता नहीं था, तो थोड़ा कुछ जैसे Hmm. सबका जैसा होता है कि ब्रोकर ने कुछ बताया, Hmm. कुछ आपने थोड़ा सा पढ़ लिया, कहीं आपको टिप मिल गया, उस तरह से शुरू किया. So obviously that some of that worked well, some of that didn't, because I remember a couple of names that couple of companies that I bought in the initial days. One was JP Associate, other was HBIL, and third was Sickle Logistics. Okay, and there is different Hmm. stories for all these three companies, and I think apart from Sickle, the two companies are now non-existent. Okay, Hmm. so Hmm. talk about long term Hmm. investing. Hmm. सो ये था, एंड देन उसके बाद न्यूज न्यूज सुन करके न्यूज के हिसाब से ट्रेडिंग करना, ये सब सब सारी गलतियां, जितनी गलतियां एक रिटेल ट्रेडर को या किसी को भी करनी चाहिए, सब करते करते धीरे धीरे आगे बढ़े हैं. देन Hmm. जब 2012 से ही एमबीए के लिए आईएम इंदौर में चले गए थे, तो देर वाज अ क्लब नेम्ड वाइज कैपिटल, जिसमें क्या होता है कि Hmm. पूरे कॉलेज के बच्चे जो रहते हैं, जो स्टूडेंट्स रहते हैं, दे यूज टू कंट्रीब्यूट मनी, एंड देयर इज अ फंड दैट वी कलेक्ट, और उस फंड को देन वी इन्वेस्ट इन डिफरेंट इक्विटीज, और इसका पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क है. ये अभी बोलने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट इट वाज ड्यूरिंग आवर टाइम्स जब इसके ऊपर हम लोग सोचना शुरू किए कि बिकॉज एज अ इंस्टीट्यूशन वी आर इन्वेस्टिंग अदर पीपल्स मनी, not as an Hmm. institution, but as within an institution we are investing other people's money. So इसको एक थोड़ा Hmm. proper legal structure देना चाहिए, so that no one raises a finger. तो उस समय ये समझ आ गया था Hmm. कि मार्केट में आप सब कुछ कर सकते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चीजों को कैसे या तो आप ग्रे जोन में लेके आओ या फिर आप उसको पूरा लीगल स्ट्रक्चर दो. तो Hmm. आज भी बहुत चीज हम लोग जो कुछ करते हैं, कई लोगों को एक बार में Hmm. लगे कि अरे यार ये कैसे अलाउड है, बट ऑब्वियसली देयर आर ऑलवेज वर्क अराउंड. एनीवेज विल कम टू दैट Hmm. लेटर. सो ये हम लोग वॉइस Hmm. कैपिटल, वहां पर आई वाज वन ऑफ द फंड मैनेजर्स, एंड Hmm. फिर हम लोग उसमें उस समय हम लोग सिर्फ इक्विटीज करते थे, और बहुत रेयरली थोड़ा बहुत ऑप्शन राइटिंग करते थे, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग का पता नहीं था, बट इट वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी गॉट इंट्रोड्यूस टू ऑप्शंस. हम लोग क्या, मेरा एक पेपर भी Hmm. था, इलेक्टिव था ऑन ऑप्शन फ्यूचर्स एंड अदर डेरिवेटिव्स, एंड ऑब्वियसली एज आई वाज Hmm. मोर इनटू फाइनेंस, तो ऑप्शंस डेरिवेटिव्स जैसे पढ़ने करने में भी मजा आता था. Hmm. वंस दैट वाज ओवर, उसके बाद ही जब जब उसके बाद फिर so one of the reasons why options was not a big thing at that point of time, because उतना कैपिटल ही नहीं होता था, और दूसरे का Hmm. कैपिटल था, तो ये उस समय से ही पता था कि बाइंग में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है. तो अपने जितने भी Hmm. सीनियर्स वगैरह थे, उन Hmm. लोग से ये सब बात होते होते समझ आने लग गई थी. वहां तो वहाँ सारी बातें भी उस तरह की होती थी, सारी बातें ऑप्शंस के बारे में होती Hmm. कि ऑप्शंस को ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हैं, and इसमें इस तरह का. और मेरा उस समय जो बेंड था, जो कि ज्यादा ऑन फंडामेंटल्स था, आई यूज्ड टू राइट ब्लॉग्स अबाउट डिफरेंट इश्यूज. जैसे यस बैंक का उस समय there was a taper tantrum जब हुआ था, and overnight rate Hmm. shot up. तो yes bank was one of the companies जिनका बहुत बड़ा बुक होता था, जो कि overnight rate के ऊपर डिपेंडेंट था. So they were Hmm. one of the best
banks at that point of time. At that point of time, उसके बाद कहानी और हो गई. At that point of time, and उसके बाद they were under huge pressure. तो उस वक्त आई रोट अ ब्लॉग एंड ये एनालाइज करने के लिए वेदर दिस सिचुएशन इज टेम्पररी और दिस इज गोइंग टू बी अ परमानेंट थिंग एंड यस बैंक क्या इस टाइम पे अंडर वैल्यूड है या नहीं है. एंड उस टाइम पे मेरा कंक्लूजन ये था कि अंडर वैल्यूड है. एंड ऑब्वियसली उसके बाद वो काफी राइज भी किया एंड देन इट सॉ इट डिमाइज इन 2018 17 18 so so after that yeah, so after that I went into Goldman Sachs and वहाँ सब कुछ बंद था. I वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हो. वहाँ पर आपको इन्वेस्ट भी करना है. तो there's a process you have to, let's say आपको एक कंपनी चूज करते हैं. I remember there's a small company named Waterbase. It's into shrimps. इनका बिजनेस बिल्कुल उसके जैसा है. अपनी अवंती फीड्स है ना, अवंती फीड्स उसके जैसा बिजनेस है, राइट. So this was my first multi-bagger. उसमें क्या हुआ था, I studied both the companies, Avanti Feeds and Waterbase, and I saw that both the companies are, have similar structure, similar kind of business, but margin-wise, even margin-wise, Waterbase was doing a little better than Avanti Feeds, right? But valuation का gap बहुत ज़्यादा था. So that was the first time जब इसमें invest किया. एंड आई टेल यू, अगर गोल्डमैन सैक्स में नहीं होते तो शायद वो मेरा फर्स्ट मल्टीबैगर बनता भी. रीजन ये था कि आप तो इसमें प्रोसेस क्या होता था. इसमें मान लीजिए आपने वाटर बेस चूज कर लिया, देन यू हैव टू सेंड अ मेल टू योर मैनेजर, टेल हिम दैट आप ये कंपनी खरीदना चाहते हो, इसमें स्टेक लेना चाहते हो. खरीदना मतलब वही कुछ 200-300 शेयर्स लेंगे, उसमें कितना शेयर्स ले लेते हैं, ठीक है. तो ये आप मैनेजर को भेजते हो, देन मैनेजर एक दिन बाद 2 दिन बाद आपको रिप्लाई करता है कि ओके ठीक है. तो वो क्या करता है, मैनेजर फिर अपने बैंड लिस्ट में देखता है कि वाटर बेस कहीं बैंड तो नहीं है, कहीं गोल्डमैन सैक्स में ऑलरेडी ठीक तो नहीं, या कोई बात तो नहीं चल रही है कि. तो वो हर एंगल से उसको चेक करके फिर आपको एक गो हेड देगा. नाउ व्हेन यू बाय इट, बाई करने के बाद आपको वापस से बताना पड़ेगा कि मैंने 400 शेयर या 500 शेयर वाटर बेस के लिए हैं, ये आपको अपने उसको भेज देना पड़ेगा. और उसके बाद आप 3 महीने तक उसको बेच नहीं सकते हो, ठीक है. और 3 महीने के बाद फिर आपको जब बेचना है तो अगेन आपको ये सेम प्रोसेस करना पड़ेगा. आपको पहले मेल भेजना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि मैं ये बेचना चाहता हूँ. फिर वो लोग 2 दिन बाद रिप्लाई करेंगे कि अच्छा ठीक है आप तुम बेच सकते हो, देन आप उसको बेच पाओगे, ठीक है. तो दिस वाज द होल प्रोसेस. और इसके बीच में मेरे को 1-1.5 महीने के लिए लंदन जाना पड़ गया था, बिकॉज ऑफ जो एक इनिशियल ट्रेनिंग वगैरह होती है उसके लिए. And that was the period when this particular stock was hitting upper circuits on a continuous basis. But उस वक्त हम बेच नहीं सकते थे. अदरवाइज होता ये कि 3 अपर सर्किट के बाद आई वुड हैव सोल्ड. ठीक है. that was the psychology at that point of time. क्योंकि ये लगता था कि अरे इतना भाग गया है तो इट विल कम डाउन. एवरीथिंग वी यूज्ड टू थिंक कि पूरी दुनिया या पूरा जो स्टॉक मार्केट है वो मीन रिवर्शन पे चलता है. while as you progress you will understand that मार्केट हमेशा ट्रेंड पे चलता है. अगर वो अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड ही फॉलो करते रहेगा, और डाउन ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड ही फॉलो करते रहेगा. देयर विल बी वेरी मतलब मीन रिवर्शन होता है, बट मीन रिवर्शन हैपेंस मोर लाइक एसएमए के ऊपर होता है. मतलब आपका सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से मीन रिवर्शन होते रहता है. सो दैट वाज माय फर्स्ट मल्टीबैगर. बाय द टाइम 3 मंथ्स गॉट ओवर, 27 का मेरा जो बाई किया था, एक्चुअली 19 में मैंने उसको फाइंड आउट किया था, उसके लिए अप्रूवल मांगा था. 27 पे आई वाज एबल टू बाय बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस. 2-3 दिन के डिले की वजह से 27 पे मैंने बाय किया था. 108 इट वेंट इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स. आई सोल्ड इट एट 108. एंड उसके बाद से इतना कोई जबरदस्त, उस समय लगा कि भाई बहुत जबरदस्त, मेरे को अब तो पूरा मार्केट का खेल आ गया है और अब तो मल्टीबैगर पे मल्टीबैगर डालना है. बट तो वैसा होता नहीं है, ठीक है. आफ्टर दैट यू फॉल इनटू अ लॉट ऑफ वैल्यू ट्रैप्स. आप निफ्को जैसी कंपनी खरीदते हो विच ऑन बुक्स आपको लगेगा बहुत जबरदस्त है, बट इवेंचुअली यू विल फाइंड आउट कि इट डज नॉट मूव. इट डज नॉट मूव एट ऑल. एंड लोग अभी शायद आईटीसी के साथ सबसे ज्यादा इसको रिलेट करते होंगे, दैट आईटीसी डिडंट मूव फॉर 5-7 years और समथिंग लाइक. ऑन एन एवरेज वो कुछ रिटर्न नहीं दिया. That was the same case with Reliance from 2007 to 2014. जब तक उनका जियो लॉन्च नहीं हुआ प्रॉपरली, तब तक वो मूव ही नहीं किया. जियो लॉन्च से 6-8 months पहले से रिलायंस स्टार्ट मूविंग, ठीक है. तो अच्छे स्टॉक्स के साथ भी ये कहानी हो जाती है. और एज अ रिटेलर यू डोंट हैव दैट लग्जरी, राइट, कि आप बैठे हो स्टॉक के ऊपर. यू डोंट नो कि वेदर इट विल मूव
कभी भी वो मूव करेगा कि नहीं करेगा, और अगर वो स्मॉल कैप है तो आपके पास तो न्यूज भी नहीं आते रहती है. देयर इज नो मैनेजमेंट हु Yeah. कम्स ऑन द टीवी एवरी नाउ एंड देन एंड गिव्स यू ज्ञान अबाउट क्या चल रहा है उनकी कंपनी. So that was the thing. So Right. that led me to shift towards understanding what momentum is, कब आपको buy करना चाहिए, what will be the right entry, और इस तरह से Hmm. फंडामेंटल से धीरे धीरे मूव टू टेक्निकल एनालिसिस, कि there's a Hmm. field जहां आप फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों को मिला के जब चलोगे Hmm. तो यू विल हैव अ Hmm. बेटर एंट्री. तो वो Hmm. that basic postulate, that basic funda is still is one of the mainstays of my trading career. यहाँ पर Hmm. I shortlist good companies and then look for technical, कि जो Hmm. कंपनीज है, जितनी भी मेरे वॉच लिस्ट में जो कंपनी रहेगी, देयर शुड बी नो इशू विद द मैनेजमेंट, द कंपनी शुड बी Hmm. ग्रोइंग. मोटा मोटी जितना भी आप एमबीए में पढ़ते हो ना, या जो भी आप फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से जानते हो कि कंपनी में, अच्छी Hmm. कंपनी में ये होना चाहिए, तो जितनी Hmm. कंपनीज उस फर्स्ट स्कैनर को पार करती है, ओनली दैट गेट्स इनटू माय वॉच लिस्ट. एंड जब वॉच लिस्ट Hmm. में एक बार Hmm. वो आ जाती है, देन आई गो फॉर कि उनका Hmm. टेक्निकल एनालिसिस देखो भाई, कहाँ कप एंड हैंडल बन रहा है, या वो सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जा रही है, और जितने सब कुछ होते हैं दुनिया भर की चीजें जो है फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग. ये हो गया. Right. नाउ द अगेन द प्रॉब्लम वाज कैपिटल. आप आई वाज वर्किंग विद गोल्डमैन सैक्स, और थोड़ा बहुत फिर चल रहा था ये सब कुछ, बट इवेंचुअली इसमें स्टॉक मार्केट का जो पुल था वो बहुत ज्यादा था. एंड Hmm. गोल्डमैन सैक्स में भी मेरा जो डोमेन था दैट वाज ऑयल एंड गैस एंड टेलीकॉम. ओके. और Okay. Hmm. इसमें मेरे को पूरी दुनिया के बारे में पढ़ना था एक्सेप्ट फॉर इंडिया. तो अच्छा. मतलब मेरा जो पूरा डोमेन था दैट वाज ईमिया एंड लैटाम एंड आपका जितना रशिया वगैरह सब सारे थे एक्सेप्ट फॉर इंडिया. Hmm. I have Hmm. analyzed the gas companies of Pakistan also. So Oh. मेरे को ये लगता था कि यार ये तो नहीं चलेगा. मेरे को तो इवेंचुअली इन्वेस्ट करना है इंडिया पे, इंडिया के बारे में ही सारा सब कुछ पढ़ते हैं. ठीक है. Hmm. देन आई गॉट Hmm. अ गुड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज, और इनका भी ऑयल एंड Hmm. गैस का डोमेन था, एंड गिवन गोल्डमैन का मेरा जो डोमेन था, तो दे वांटेड टू क्रिएट अ स्ट्रेटजी टीम हियर. तो Hmm. उसकी वजह से आई थॉट कि चलो, एंड ऑब्वियसली वी ऑलवेज कंपेयर कि भाई कितना मिल रहा है, तो वो सब कुछ Hmm. ठीक लगा, तो भी आई टुक अ स्विच. और यहाँ आने के बाद फिर Okay. उतना कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था एक्सेप्ट फॉर रिलायंस. आई कुड ट्रेड ऑन एनी स्टॉक, राइट. Right. Right. तो फिर वहां से एक्चुअली फिर शुरू हुआ, जहां पर कि जैसे आजकल ऑफिस जाते जाते भी लोग अपना थोड़ा बहुत ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर. और फिर वहां से Hmm. ऑप्शंस एक्चुअली रिलायंस में, मतलब यहाँ मुंबई आने के बाद, देन स्टार्टेड डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग. थोड़ा बहुत पहले Hmm. काफी स्ट्रेटजीज के ऊपर था, सेलिंग था, सब कुछ था. धीरे धीरे करते करते कुछ मिस्टेक्स में बड़े बड़े, और फिर ये Hmm. समझ आने लगा कि ये तो नहीं करना है. ये अब एक्चुअली यू नो इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग करियर इज मोर अबाउट, आपको ये पता करता, मतलब अपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते जाना पड़ता है. यार ये नहीं काम करता, ये नहीं Hmm. करना, ये काम नहीं करता, ये नहीं करना, ये काम नहीं करता, ये नहीं करना है. तो इवेंचुअली Hmm. जो छोटा सा एक स्ट्रीम बच जाता है, वही आपको करना है, Hmm. लगातार करना है और अच्छे से करना है. Hmm. Hmm. As Bruce Lee says, I respect. I don't respect the man who knows 10,000 thousand types of kicks, but the man who knows one kick 1,000 times, right? Right, So right, I think specialization is important. You have to choose one strategy and really become a master in that. right. True. Right. Sorry. ये बताइए विवेक. So now, as we speak, so are you again now? What are you doing? Are you continuing to do your investments in, or you're primarily concentrated now on the option side? I mean, what's your mix right now? So mix right now is that I'm doing both. तो एक Both. बड़ा बुक है जो कि इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग का है इक्विटीज में, एंड एक बड़ा बुक है जो कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए डेडिकेटेड हो गया. आज की डेट में अल्गो ट्रेडिंग के ऊपर चला गया.
Okay, okay, okay. So tell me one thing, as a as someone who started out part time, tried many things, and now you have sort of gravitated towards few things that you are now trying to master. So, if you have to give an advice to upcoming traders or new newbies, what are some of the 2 3 points that you would like them to keep in mind, and some any advice that you want to give to them? Newbies as in who is new to trading or new to like full मतलब जो switch करना चाह रहे हो full time trading के लिए. No, no. What I meant is new to trading. I mean, I'm not on the full time versus part time. हाँ Just हाँ. generally as a trader, anyone who is new, what advice would you want to give to them So as a new अगर trader? yeah, see if you are starting with equities, let's say. So equities में one of the mistakes that we do is we try to leverage ourselves through margin trading funding. Margin traded, brokers की तरफ से जो आपको leverage मिलता है. Never use that. Hmm, hmm, Never use that. hmm, आपको लगेगा कि शायद returns कम हो जाएंगे, but hmm, जो जब आप मार्जिन पे ट्रेड करते हैं, यू एक्सपोज hmm, योरसेल्फ टू अ लॉट ऑफ यू नो लॉट ऑफ नेगेटिव ऑड्स अगेंस्ट योरसेल्फ, hmm, ऑड्स अगेंस्ट योरसेल्फ. क्योंकि hmm, होता ये है कि आप जो ब्रोकर की तरफ से फंडिंग मिलती है, एक तो पहले उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, उस जितनी भी डेबिट आपकी आती है. दूसरी hmm, चीज ये hmm, रहती है कि इट इज स्टिल अ पॉइंट, 5 दिन 7 दिन, आजकल आजकल साल साल भर वाला होने लग गया, बट दैट इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ कॉस्ट एज वेल. एंड hmm, उसकी वजह से आप हमेशा बहुत पेपर थिन मार्जिन पे काम करना सीखते हो. मतलब यू विल ऑलवेज गेट इन एंड आपको हमेशा जल्दी निकलने की रहेगी, बिकॉज अगर आप उसको होल्ड करते हो अगले दिन 2 दिन 3 दिन के लिए, तो उसमें क्या होता है कि आपके कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हैं. ठीक है. hmm, hmm, उसकी जगह पे जब आप अपनी सिर्फ 1x कैपिटल पे जो रहता है उस पे जब आप काम कर रहे होते, आप हमेशा यू कैन गिव सम टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट या योर hmm, पोजिशन. If it is not hmm, working for, if it does not work for 1 2 3 days, no one is going to charge you anything hmm, above जो भी मार्केट में चल रहा होगा उसके अलावा, राइट. तो दैट hmm, गिव्स अ लॉट ऑफ मेंटल कंफर्ट. और फिर क्या होता है कि अगर ये जो बहुत ज्यादा हॉपिंग वाला जो नेचर होता है ना, कि ये इन्वेस्टमेंट ट्राई करते, ये नहीं हुआ दूसरा ले लो, तो इसके बारे में तो जितना बोला जाए कम है. कि इसको इनिशियल डेज में कम से कम इसको कंट्रोल करना चाहिए. रीजन ये हो जाता है कि आप बिल्कुल नए नए सब कुछ सीख रहे होते हो और सब कुछ आपको नहीं पता होता है. यहाँ hmm, पर जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हो ना, आपको ये लग रहा होता है कि न्यूज सीएनबीसी पे अगर कोई न्यूज दे रहा है किसी स्टॉक ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया, तो तुरंत उसको बाई करो. और कभी कभी क्या होगा, बाई किया और धड़ से वो उठ जाता है. यू थिंक कि दिस इज द वे टू ट्रेड, बट hmm, इट वाज मोर ऑफ अ फ्लूक. और जैसे एनएन तालिब कहते हैं, फूल्ड बाय रैंडमनेस, कि hmm, एक दो बार लक आपके फेवर में आ गया और वो एक शॉर्ट अप आ गया, एंड आपने उसको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी समझ लिया कि सीएनबीसी बोलेगा कि रिजल्ट अच्छा hmm, हुआ है तो यू बाई एंड यूल मेक मनी. मोस्ट ऑफ द hmm, मोस्ट hmm, ऑफ द टाइम अगर आप मिला जुला के देखोगे तो नहीं होता है वो. ठीक है. hmm, क्योंकि hmm, सब चीज के लिए प्लानिंग पहले से हो जाती है. मार्केट में मैक्सिमम न्यूज पहले से पता रहता है. तो एक्चुअली जब जब सीएनबीसी पे न्यूज आ रहा होता है, उससे पहले जितने भी इंसाइडर्स रहते हैं, जितने भी वेल इन्फॉर्म्ड कनेक्टेड ट्रेडर्स रहते हैं, उनको सब कुछ पहले से पता रहता है. तो अगर hmm, ओनली इफ देयर इज अ सरप्राइज ओवर एंड अबव दैट व्हाट दे नो, hmm, तभी वो स्टॉक hmm. रिएक्ट करता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में सीएनबीसी बता रहा होता है कि उस मतलब इफ द रिजल्ट इज गुड तो ऐसा होगा. Yes. अदरवाइज क्या होता है, जिस समय सीएनबीसी ये बताएगा कि रिजल्ट इज गुड, उस समय जो ट्रेडर्स रहेंगे दे स्टार्ट सेलिंग आउट. क्योंकि हो गया उनका, वो नीचे में खरीद चुके थे और अब उनको Hmm, पता है कि इसकी वजह से रिटेलर्स की अच्छी खासी फौज आएगी जो इस स्टॉक के लिए लिक्विडिटी क्रिएट कर देगी, और उस समय वो अपना बेच के निकल जाना चाहेंगे. तो फर्स्ट, hmm, डोंट ट्रेड ऑन न्यूज. आपको चार्ट्स देखना आना बहुत जरूरी है अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो, और hmm, इक्विटीज में ट्रेड करना चाहते हो तो. आई hmm, थिंक चार्ट का थोड़ा नॉलेज आ जाना, hmm, और उसको प्रॉपर ढंग से आप जब धीरे धीरे अप्लाई करना सीख जाते हो, दैट सॉल्व्स अ hmm. लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू. ठीक है. आप न्यूज Right, देखो, right. और अगर आप न्यूज भी देख रहे हो तो न्यूज देखने के बाद चार्ट क्या बोल रहा है वो समझना बहुत जरूरी है. अगर आप फंडामेंटल भी देख रहे हो कंपनी को, तो फंडामेंटली कंपनी
अच्छी लग रही है तो उसके बाद फिर आप चार्ट देखो, चार्ट देख करके आपको प्राइस में क्या दिख रहा है। चार्ट इज बेसिकली प्राइस क्या बोल रहा है, प्राइस इज व्हाट, प्राइस इज बेसिकली कि जो बड़े लोग हैं जो प्राइस को मूव कर सकते हैं वो लोग स्टॉक को क्या करवाना चाहते हैं। अगर वो बोल रहे हैं हम्म कि 7 साल तक आईटीसी नहीं मूव करेगा, वो अपने हम्म मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर नहीं जा रहा है और उसको नहीं मूव करने हम्म दे रहे, तो नहीं मूव करेगा। वाई यू आर बिकमिंग कॉन्ट्रारियन और हीरो बन करके आप उसको बाई करके क्या हासिल कर लोगे। ठीक है, राइट राइट तो ये एज अ रिटेलर एज ए न्यू भी हम लोग को ये समझना बहुत जरूरी है। got it. I think we'll take one question which is from the audience. श्योर। Rupesh Kumar. Rupesh, are you there? Okay. I think okay. I'll keep him as a speaker. I think he must be a mute or something. So while he comes up, one question from my side, Vivek. So I saw on your profile you have your own company called Witty Capital, right? So uh, Yes. tell a little about that. I mean, so are you structured as a corporate? Is that how you're trading, or is that more of a? So what exactly is Witty Capital, and a little bit about that? Okay, so Witty Capital, VTY Consulting, the name with which it is registered. Hmm. So this is more of like we wanted to do a lot of things apart from trading. Like there was we started with some educational stuff as well, Hmm. and we are also structured like a authorized person to access direct. So me with my cousin Shubham, Hmm. is also chartered accountant, Hmm. और हम लोग दोनों ने मिल करके ये साथ में शुरू किया. And the अच्छा. idea is to gradually grow it into a company where, not today, but at some point down the line, जहाँ पर कि हम लोग basically PMS के रूट में जाना चाहेंगे इस पर्टिकुलर Hmm. कंपनी के साथ. Hmm. 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 Got it. Okay. So I think there is one more question. Shubham Sharma. Shubham. Shubham, can you hear me? I don't know. There's some issue. Uh, okay. Uh, Fine. No problem. So Hello, Vivek. hello, hello. Am I audible? Hello. Yeah. Yes. Yeah. Shubham. Go ahead. Yes, sir. Sir, I used to first trade in investment stocks like Reliance. जैसे स्पेस अब मैं इंग्लिश में क्यों ही बात करूं, मतलब आपको बता पाता हूं मैं कि मैं पहले हाँ ऐसे जी. इन्वेस्ट करके रखता था रिलायंस में, टाटा स्टील में, ये सब में मेरा बनते गया. तो मैं कोविड टाइम में शुरू किया ऑप्शन बाय करना, और मैं खाली स्टॉक ऑप्शन कर रहा हूँ अब. कोई निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं, ओनली स्टॉक ऑप्शन, और काम भी करता है. तो ये क्या स्केलेबल है? मतलब क्या मैं इसमें और पैसा डाल सकता हूँ? इस टाइप का है कुछ कि मैं एक सेफ सोर्स रखूं कि मतलब पूरा एक अच्छा अमाउंट नहीं डालूं डीमैट में. Stock options scalable किस बाय करता हूँ मैं जनरली. राइट, बट कितना स्केल आप करना चाह रहे हो जैसे उसके मैं ऊपर है. दूसरी चीज है कि सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नॉट डिस्करेज यू फ्रॉम कई लोग बोलेंगे कि बाइंग से पैसा नहीं बनता, बट आई थिंक कि बाइंग में देर आर पीपल हु आर मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बाय बाइंग ऑप्शंस, राइट. यस तो बाइंग. ये बोलना कि बाइंग से पैसा नहीं बनता वो गलत चीज है. हाँ, बनता तो सौ सॉरी. टका है पैसा बाइंग से, पर राइट, वही है कि बट पहले मैं क्या बैंक निफ्टी कर रहा था तो मेरे को जमा नहीं, तो मैं सोचा कि भाई ऐसा थोड़ी उसी से ही कमाना है, तो मैं स्टॉक ऑप्शन शुरू किया. मेरे को जम भी रहा है, पर क्या मैं थोड़ा सा भी साइज बढ़ाता हूँ ना तो फिर मेरे को एक जम नहीं पाता है. तो मेरे को वही पूछना है क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए मेरे को ज्यादा स्केल. स्केल कितना करना है वो तो आपके कैपिटल पे, आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करेगा, राइट. दूसरी चीज ये है कि हाँ, जब आप छोटे पोजीशंस पे काम कर रहे होते हो, छोटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू योर कैपिटल, यस ठीक है. यस. हाँ. अगर लेट से आप कोई भी एक पोजीशन ले रहे हो जो कि आपके ओवरऑल कैपिटल का 3 से 5% के बीच में है, तो आई थिंक यूल बी मोर कंफर्टेबल उसमें. थोड़ा बहुत अगर लॉस लगता भी है तो यूल बी
आप वो कहीं और से रिकवर कर ले रहे होगे, या अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है। सो अगेन, जितनी भी बाइंग स्ट्रेटजीज रहती है उसमें रिस्क मैनेजमेंट इज ऑफ द अटमोस्ट। एक्चुअली किसी भी तरह के ऑप्शंस में कभी भी आप डील कर रहे हो तो रिस्क मैनेजमेंट इज पैरामाउंट। हाँ, मैं ट्रेन करता हूँ। बाइंग में as you know there are other risks, and especially if you are doing stock options, so कि physical settlement has become a big menace, because last week में आप स्टॉक्स के साथ में डील कर रहे होगे तो कभी भी आईटीएम होगा तो देयर विल बी अ बिग रिस्क। तो सर तो ये चीज बाकी तो सर जैसे मैं बाय रहेगा उसमें भी मेरे को डिलीवरी का ये दिक्कत हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, आईटीएम होगा तो देयर विल बी एन इशू। वो आपका ये बढ़ेगा, क्या नाम है, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है पर डे वो बढ़ते जाएगा टिल एक्सपायरी। तो सर जैसे प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो जैसे 500 चल रहा है एसबीआई में, 530 का स्ट्राइक लिया, मैं सोचता ओटीएम लेता नहीं, पर अगर मैं लिया और वो 540 हो गया तो मतलब मेरे को डिलीवरी लेना पड़ेगा एंड में? नहीं, ये नहीं है कि डिलीवरी लेना पड़ेगा, कि आपके पास इतना मार्जिन होना, ऑप्शन के वैल्यू के हिसाब का मार्जिन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। हाँ। अगर नहीं होगा तो द ब्रोकर विल स्क्वायर इट ऑफ ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी एट वॉट एवर प्राइस दे फाइंड एट, जब लास्ट में उनको स्क्वायर ऑफ करना होता है तो वो बहुत बड़ा रिस्क रहता है। आई थिंक सौरभ सिसोदिया हैज रिटन अबाउट इट इन वन ऑफ his tweets as well. Got it. I think we'll take the next question from Aman. Aman, you're there? Yeah. हेलो विवेक सर। Hi Aman. सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग नॉन डायरेक्शनल। तो मेरा इस महीने में 2 से 3 बार स्पाइक की वजह से मेरे लॉसेस, मतलब जितना प्रॉफिट आना चाहिए आता नहीं। स्टॉक मार्केट पे जो मैं बैक टेस्ट करता हूँ उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कुछ और दिखाता है, पर मेरा रिजल्ट प्रॉफिट बहुत ही कम होता है। ऐसा 2-3 बार हो चुका है मेरे साथ, तो उसको कैसे कम कर सकते हूँ मैं? 2 चीज समझना जरूरी है। स्टॉक मार्केट जो भी आपको रिजल्ट दिखाता है ना, वो 1 मिनट के कैंडल के हाई और लो वैल्यू के बेस पे रहता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो नंबर्स उसमें आते हैं कई बार देयर विल बी अ मिसमैच। स्टॉक मार्केट के साथ में तो मेरी नीतीश जी से डायरेक्ट बात हुई थी, उन्होंने ये बताया था कि बहुत सारे जो स्पाइक्स की वजह से जो आपके स्टॉप लॉसेस जाते हैं ना, उसमें बहुत कुछ ऐसा रहता है जो उनके में कैप्चर ही नहीं होता है। तो एनएससी का जो टिक डेटा रहता है उस टिक डेटा में कैप्चर ही नहीं होता है। दिस इज व्हाट ही सेड। सो दैट्स व्हाई स्टॉक मार्केट में या किसी भी और, नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट, किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जो कि बैकटेस्टिंग का प्लेटफॉर्म है, उसमें ये इशू रहता है। दैट्स व्हाई इन वन ऑफ माय ट्वीट्स आई सेड कि अगर आपको 70% भी जो आपको रिजल्ट शो हो रहे हैं इस पे आपके स्टॉक मार्केट पे या बैकटेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे, उसका 70% भी अगर आपको मिल जाए तो बी हैप्पी। ओके, सेकंड थिंग इज, सॉरी, ओके सर, बोलिए। Second thing, if you are facing issues with respect to spike, which everyone is since October 2021, क्योंकि उसके बाद से मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डेफिनेटली चेंज हो रहा है, और इसमें शॉर्ट मतलब वो वोलैटिलिटी बर्स्ट जिसको आप बोलते हो ना, वो काफी देखने को मिल रहा है। तो स्पाइक हैव बिकम अ नॉर्म, एंड वो आने वाले टाइम में इट विल कंटिन्यू टू बी सो। इसका एक तरीका what I have implemented is, and you can definitely test with some other parameters as well, is that once your SL level is hit, we put about some seconds, and people say ये vary कर सकता है, कोई 3 सेकंड लेते हैं, कोई 5 सेकंड लेते हैं। I've heard Kiruba Karan who says that he used to keep 30 seconds or something. 30 seconds for my strategy will be too much. So I generally keep 5 seconds to 7 seconds. आप इसके साथ ट्राई कर सकते हो। The idea is to avoid the spikes, not that अगर वो रियल मूव है तो आपका स्टॉप लॉस जाना चाहिए वहां पर। जी सर। स्टॉप लॉस नहीं जाना विल बी अनदर पेन। हाँ ओके सर, यही जाना। और सर मेरी स्ट्रेटेजी हमें वो मैक्सिमम ड्रॉडाउन को भी मतलब बढ़ाना चाहिए, या फिर उसी के अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम लॉस उतना ही रखना चाहिए? सॉरी, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन कंप्लीटली। सर जैसे हम बैक टेस्टिंग करते हैं तो हमारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन आता है,
तो हाँ उसको भी हमें बढ़ा के लेके चलना चाहिए कि हाँ इसका ये वन एक्चुअली सी रियल मार्केट्स के हिसाब से यू शुड ऑलवेज टेक द मैक्सिमम drawdown is at least 2 times of what the backtesting platform is telling you. Got it. We have the next question from Anurag. Hi, good evening. Hi, Vivek, how are you? Hi Anurag, I'm fine. Only just one question. What's your current view on the market right now, considering today's massive move? अभी क्या लग रहा है आगे? Any particular sector or stock which you are looking at right now? See, overall, structurally, market is looking bullish, no doubt about that. और एक्चुअली अगर आप देखोगे तो जो भी क्लासिक पैटर्न्स होते हैं या आप बोल सकते हैं कि आई थिंक देयर इज एन इको. Anurag, I think you need to be on mute. Yeah. Okay. Yeah. Now. Yeah. So structurally, market is showing कि एक बार के लिए तो bottom बन गया है. There's nothing to be panicked about now. Globally, things are getting back. थोड़ा सा सब कुछ ठीक हो रहा है रशिया वाले मैटर की तरफ से भी और फेड का भी जितना है दे हैव शोन अ ट्रैजेक्टरी की बस हो गया अभी इन्फ्लेशन है हम लोग एक्सेप्ट कर लिए कि इन्फ्लेशन है ओवर द नेक्स्ट 2-3-6 मंथ्स वो पीक आउट कर जाएगा एजेंसीज जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फेड वगैरह जितने भी लोग हैं दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. तो मार्केट के साथ हमेशा वही रहता है कि इफ एक कोई प्रॉब्लम है जो नोन हो गया है जिसके बारे में डिस्कशन हो गया जिसके बारे में स्टेप्स लिए जा चुके हैं वेरी रेयरली यू विल सी दैट मार्केट गेट पैनिक सो बिकॉज ऑफ दैट ट्वाइस और थ्राइस. तो इन्फ्लेशन वाला मैटर भी एक बार के लिए हो गया सब कुछ उसके लिए जो भी कुछ करना है एंड द थिंग इज दैट फेड इज शोइंग दैट इट इज नॉट इन अ मूड टू ड्रैग इट फीट बैकवर्ड्स विच इज अ गुड थिंग. इसका मतलब ये है कि ओवरऑल आप inflation is a economic outcome जो लगातार आते रहेगा हर कुछ साल में हर कुछ महीने में वो आते रहेगा और उस समय सेंट्रल बैंकर्स किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा. मार्केट इज वेरी इंटेलिजेंट. अगर सेंट्रल बैंकर्स किसी प्रॉब्लम को छुपाने की कोशिश करेंगे मार्केट जल्दी उसको समझ करके पहले नीचे गिरने लग जाएगा. अगर किसी प्रॉब्लम की तरफ वो लोग पॉजिटिवली रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं तो मार्केट टेक्स अ हार्ट एंड फिर वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है. द ओनली अदर इशू इज लिक्विडिटी कि लिक्विडिटी अगर मार्केट से लगातार स्टक आउट हो रही है तो इवेंचुअली लोगों के पास पैसा कम होते जाएगा टू इन्वेस्ट. इसका मतलब ये है कि वैल्यूएशन जहां बहुत रीजनेबल होंगे लोग वहीं पैसा डालेंगे. जो भी फ्रॉथी वैल्यूएशन है वो अभी और गिरेगा. तो ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ जितने भी आप सबसे सिंपल प्राइस टू अर्निंग्स के हिसाब से देखिए. ऑब्वियसली प्राइस टू अर्निंग्स इज नॉट परफेक्ट मैट्रिक्स बट मोस्ट ऑफ द केसेस में प्राइस टू अर्निंग्स को आप एक्सट्रपलेट करके काम चला सकते हैं. द better matrix will be to understand a particular sector, understand a particular industry and उस इंडस्ट्री के हिसाब से EV by EBITDA ज्यादा बेटर मैट्रिक्स है या प्राइस टू सेल्स ज्यादा बेटर मैट्रिक्स है या what are the things that decide that particular sector उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ता है. बट फॉर अस जहाँ ज्यादा पता नहीं है वहां पर प्राइस टू अर्निंग्स का थोड़ा सा एक आइडिया कि प्राइस टू अर्निंग्स करेंटली क्या चल रहा है विच इज लाइक लास्ट 12 मंथ के हिसाब से अर्निंग्स के हिसाब से क्या वैल्यूएशन दिया जा रहा है और अगले 12 महीने में व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ 12 या 24 महीने में क्या एक्सपेक्टेशन है अर्निंग्स की उसके हिसाब से आज प्राइस टू अर्निंग्स क्या बन रहा है. ठीक है. तो अगर वहां उसमें उसके हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि प्राइसिंग थोड़ी सी ठीक है इस पर्टिकुलर स्टॉक की तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी क्रूड वे. इसके बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा टू एक्चुअली वैल्यू अ पर्टिकुलर कंपनी और द मार्केट एज सच. बट ओवरऑल टेक्निकली मार्केट इज बुलिश. अभी शॉर्ट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है. तो स्टे विद द बुलिश ट्रेंड
बाई करने के हिसाब से my particular favorite sector right now is auto. I think a lot of people will agree that there's a pent up demand, and with steel prices going down, there's a case for a lot of auto companies to show much higher margins, possibly if the pent up demand, kind of gets realized, because interest rates बढ़ रहे हैं. I think जो भी कार वगैरह लेना चाहते हैं वो लोग interest rate की वजह से कार परचेज करना कभी भी डिले नहीं करते हैं. इट्स जस्ट दे विल एंड अप पेइंग मोर. तो बैंक्स के लिए भी कुछ पैसा बन जाएगा और ऑटो कंपनीज की भी मार्जिन बढ़ जाएगी. तो दीज टू थिंग्स, कभी भी इकोनॉमी अगर रिकवरी फेज में होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे होते हैं, तो जो निम्स का गैप रहता है वो भी बढ़ जाता है. तो बैंक्स के लिए वो अच्छा होता है. और ऑटो कंपनीज के लिए तो डिमांड इतनी ज्यादा है अभी फिलहाल. डिसेंट डिमांड है, नॉट बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, डिसेंट डिमांड है. तो दैट इज द थिंग. आई थिंक दीज टू सेक्टर्स शुड डू वेल. Right. We have next question from Wall Spike. Okay. Wall Spike, you want to ask the question? अडानी ग्रुप कंपनीज को वैल्यू कैसे करे, मतलब बिकॉज वो काफी बड़ी कंपनीज है एंड उसका वैल्यूएशन काफी छोटी कंपनीज के जैसे है. मतलब वो काफी हाई पी छोटी कंपनीज में दिखते हैं बट बड़ी कंपनीज में इतने कभी नहीं दिखेंगे. एक्चुअली अडानी के साथ में अडानी को आप नहीं वैल्यू कर सकते. सॉरी, आप किसी भी प्रॉपर मैट्रिक्स के अंडर में आप उसको वैल्यू नहीं कर सकते. द रीजन बीइंग कि उनका सब कुछ फ्यूचर के हिसाब से है. दे आर इन्वेस्टिंग सो मच इन सो मेनी इंडस्ट्रीज. इफ यू थिंक वन पर्सन कैन हैंडल, सी अगेन कोई एक वन पर्सन नहीं होता है. उनके अंदर डिफरेंट मैनेजर्स आर देयर हु इज लुकिंग इनटू डिफरेंट वर्टिकल्स. सब सही है, बट इवेंचुअली इट्स वन पर्सन एट द हेल्म हु इज लुकिंग आफ्टर सच अ बिग एम्पायर. और वो लगातार अपने नए वर्टिकल्स ऐड करते जा रहा है, जो सीमेंट में नंबर 3 बन गए हैं. और पता नहीं हर एक पावर सेक्टर में है, एनर्जी में है, ऑयल, एवरीथिंग दे हैव फिंगर. ये आपके फॉर्च्यून रिफाइन ऑयल भी बेच रहे हैं. सो दे हैव फिंगर इन एवरीथिंग, राइट. एंड somewhere there's a favorable government for them. ये सब कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. बट द थिंग इज, ये कहानी अभी अलग चल रही है. अभी क्या हो रहा है कि उनके पास डेट है टू एक्सपैंड. वो नई कंपनीज बाई कर सकते हैं. उनके ऊपर डेट के ऊपर किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. जो भी वो कर रहे हैं, इट्स अ ग्रैंड प्लान. और प्लान्स का क्या है, मैं अपनी कंट्री बना रहे, कैसे वैल्यू कीजिएगा. हम लोग सब मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं, सब नहीं बोलेंगे. बोलिए. Okay. Rakesh, you want to ask the next question? So my question is around algo trading. So which broker API is stable apart from Zerodha? Because I don't want to invest 2,000 rupees per month for algo testing. Right, I understand. See, I have used actually Zerodha, IAFL, and what's the name? Fires. So I've tested only these three brokers. Zerodha is obviously one of the most stable APIs. But again, it comes with a cost, and the cost is too much. It's approximately 5,000 rupees per month. 2,000 जो आपको डायरेक्ट लगता है, उसके अलावा भी अगर आप प्रॉपर ढंग से करना चाहते हो तो 4 से 5,000 रुपये लग जाता है. विच जो कि एक छोटे अकाउंट के लिए शायद बहुत अच्छा नहीं होगा. फायर्स में काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं. नॉट दैट कि वो तुरंत में ऐसे विजिबल होंगे, वो भी आप आराम से कर सकते हो. अगेन इट कम्स विद अ वेरी स्मॉल कॉस्ट, बट देयर इज कॉस्ट इन्वॉल्व. IAFL इज समथिंग जिसके साथ हम लोग टाई अप में भी हैं. तो जो भी हम कह रहे हैं, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज वी आर एसोसिएटेड विद IAFL एज वेल. तो but their APIs are very stable, or very only few times we have faced problems in the last 6 months, जहाँ पर बाकी और brokers भी face कर रहे थे. Hardly at any point of time we have seen कि बहुत ज़्यादा और बहुत देर तक का इशू चल रहा है, ऐसा नहीं. तो and it's free, first of all. The biggest thing is it's free, and I would say the uptime is close to 99%, yeah, 98% kind of.
thing. Okay. तो Fires मैंने use किया है. I will try IFL and see how is the Yeah, feedback. Yeah, thank you. pleasure. Right. So, Vivek, one question. As a algo trader, this question Yeah, from my side. As an algo trader, you mentioned. I think you briefly mentioned about this, but what's your what are you seeing? Do you feel that the market structure has it changed in any way? And particularly because now algo trading is becoming so popular, there are so many people who are adopting it. So, do you feel because of that, is that in any way contributing to the changing market structure, or do you think that is not the case? see, actually, when you're saying that a lot of people are adopting it, you are talking about the retailers. That the retailers आकर के अब उनका भी जैसा आई एम ऑल्सो रिटेलर राइट. तो Hmm. हम लोग थोड़ा अब एल्गो की तरफ ध्यान देने लग गए हैं. बट I read this somewhere in some data that almost 70-75% orders already algo के थ्रू ही जाते जाते हैं. ठीक है. रिटेलर्स आर अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन और मे बी 75 से भी ज्यादा है शायद 90% भी टच करने लग गया है. So we are very small fraction of that. So we are not changing the market. The only thing is, at in the last 2-3 years, we have seen periods where the premiums were crazily high because of IVs, and डर बहुत ज्यादा था and उसके corresponding market movements नहीं थी. So जितनी भी strategies आज के डेट में बनती है, इधर buying strategy और selling strategy work कैसे करती है? Buying strategy will work जब आप पहले कम पे कर रहे हो और उसके करस्पॉन्डिंग मार्केट में मूव बहुत ज्यादा आ जाए आपकी डायरेक्शन में, यू मेक इंसेन अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है. Hmm. सो द फर्स्ट केस इज वेयर द implied volatility is low versus the realized volatility. Realized volatility is the actual delta movement. ठीक है. Hmm. सेकेंड केस है जो सेलिंग के केस में होता है, वेयर द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, मतलब डर इतना ज्यादा है लोगों को कि उसके लिए प्रीमियम्स बेसिकली क्या है? प्रीमियम्स आर एक तरह से आप पैरामीटर समझ लीजिए टू गेज कि मार्केट में डर कितना है. लोगों के जो भी ऑप्शन सेल कर रहे हैं वो Hmm. उनको क्या लग रहा है कि मार्केट कहाँ तक मूव कर सकता है, बिकॉज दे वांट टू कवर देमसेल्व्स राइट. कि मार्केट इतना मूव कर जाए तो जो भी मेरे से ऑप्शन बाई कर रहा है वो मेरे से पैसा बना नहीं पाए. एंड दे आर द वंस जो कि पूरी तरह से रिस्क के बारे में सोच करके एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बिकॉज दे आर अपफ्रंट putting in more margin. And I'm not talking about from the retailer's point of view, I'm talking about from the institutional point of view. कि जब भी वो लोग ऑप्शन राइटिंग वगैरह करते हैं तो इट्स नॉट लाइक वो लोग बोलते हैं चलो ठीक है यहाँ से 200 पॉइंट दूर का सेल कर दो, इतना दूर तो मार्केट जाएगा नहीं. वो लोग जब भी ऑप्शन को प्राइस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ये देखना चाह रहे हैं कि मार्केट में किस लेवल की वोलेटिलिटी है, आने वाले टाइम में क्या क्या हो सकता है, और इवेंचुअली मार्केट का मूवमेंट किस रेंज तक रह सकता है. एंड बेस्ड ऑन दैट दे डिसाइड कि अगर मेरे को ये प्रीमियम बेचना है, मतलब ये स्ट्राइक बेचना है, जिसमें मेरे को कम से कम इतना प्रीमियम तो चाहिए, सो दैट आई एम लाइक 70-80 और वट एवर द परसेंटेज दे आर ओके विथ, उतने लेवल तक मैं सेफ हूँ. सो दैट पुशेस दी, तो प्रीमियम का बिडिंग उस टाइप से होते रहेगा. प्रीमियम बिड जैसे जैसे करते जाएगा, पूरे ऑप्शंस के फॉर्मूला में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज बेसिकली अ थिंग जो कि आप बैक कैलकुलेट करके डाल सकते हो. तो प्रीमियम्स के हिसाब से इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कैलकुलेट होता है. कई लोग बोलते हैं कि आज वोलेटिलिटी बहुत बढ़ी हुई है, आईवीज बहुत बढ़े हुए, वैसे प्रीमियम्स बढ़े हुए हैं. इट्स द अदर वे राउंड. प्रीमियम्स हाई रहते हैं इसलिए हम लोग उसको बैक कैलकुलेट करके देखते हैं कि अच्छा मार्केट बोल रहा है कल तक ये 20 के आईवी पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पे काम करने के लिए तैयार था, आज देयर इज समथिंग हैज हैपेंड, चाइना वापस से ताइवान के ऊपर मूव कर रहा है, यूएस इज सेइंग कि नहीं आगे जाओगे तो हम कुछ करेंगे. तो इसकी वजह से आईवीज हैव जंप्ड फ्रॉम 20 to 25. ठीक है, बिकॉज कुछ एक इम्पेंडिंग इवेंट हो सकता है. फेड बोल रही है, फेड आने वाली है रात में, कुछ बोलेगी, हो सकता है 75 बेसिस पॉइंट्स बोल के गए थे, 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं. तो दिस इज एन अनसर्टेनिटी जिसकी वजह से मार्केट में काफी कुछ हिलेगा. तो जो मार्केट का रेंज है वो बढ़ सकता है. रेंज बढ़ेगा तो जो सेलर है वो पहले से उसके लिए फैक्टर इन करना चाहिए. दिस वाज द बेसिक थिंग कि ऑप्शन सेलर्स वर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी with simpler strategies because of the actual move in the market being much lesser than the implied move. That's why they were making easy money.
Now that thing has changed. Now the premiums are such जहाँ की आईवीज जो कि बैक कैलकुलेट करके आईवीज अगर आप देखोगे तो आईवीज बहुत ज्यादा नहीं है, बट जो इंट्राडे मूव्स आ रहे हैं मार्केट में वो काफी फास्ट आ रहे हैं, काफी शार्प आ रहे हैं. दिस वन मोर पॉइंट जो बताना चाहूंगा कि अर्लियर और अभी में जो चेंज हो रहा है वो क्या हो गया. आज के डेट में जितने भी न्यूज होते हैं ना वो फर्स्ट 15 मिनट्स में आपके प्राइस में कैप्चर हो जाते हैं. उसके बाद जो रहता है, अगर आप लास्ट आई थिंक 1.5-2 साल 3 साल का डेटा भी अगर आप देखोगे, यू विल सी कि गैप डाउन के बाद द मूवमेंट फॉर द इंडेक्स is confined within 2% of range most of the time. 85-90% में कैसे योगेश नंदा presented this data in one of his tweets, जहाँ उन्होंने बताया था कि almost if I'm not wrong 93% of the time the delta movement for the index is within 2% of the range. So now अगर 2% range के भीतर में ये होना है तो there will be different kinds of players. अभी एक जो scalper है वो कैसे पैसा बनाएगा. He'll use the pivot जहां से मार्केट फास्ट मूव कर सकता है. He will come with a good force, make money, get out. That will lead to creation of spikes जो आपको विक्स दिखता है. तो वो सब भी हो रहा है मार्केट में. एंड देयर आर, तो अर्लियर क्या था कि बहुत सारे इंजिन जो थे, बहुत सारे लॉजिक्स जो थे वो रिटेलर्स को अवेलेबल नहीं थे. ठीक है, वो इवन इंस्टीट्यूशंस को भी उतने ऑब्वियसली सारे एल्गो ट्रेडिंग जो सॉफ्टवेयर वगैरह है वो सब भी इवॉल्व करते जा रहे हैं. तो आज के डेट में द इंजिन्स आर मच फास्टर. आप एक और उसमें लॉजिक आप काफी सारे लगा सकते हैं. तो स्कैल्पिंग हैज कम अप इन अ वेरी बिग वे नाउ. तो जिसकी वजह से आज जो मार्केट में आपको इतना फास्ट मूव्स दिखता है, एकदम एक तरफा ऊपर मूव फटा है और फिर धड़ से पूरा का पूरा वो सेल ऑफ भी हो गया. इट इज व्हाट इज चेंजिंग. और इसकी वजह से आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो बहुत ज्यादा हिट हो रहे हैं. No one is going after them deliberately, but they are doing their own thing and it is coming in your way. Take it this way. कोई आपके स्टॉप, आप ये उसको पता नहीं है कि भाई विवेक ने कहाँ अपना स्टॉप लॉस सेट किया, उनको नहीं पता है ये. उनको मतलब ऑब्वियसली आज के डेट में हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो, बट उससे कोई खास फायदा उनको होगा नहीं. दे सी इट एज अ क्लस्टर. इस क्लस्टर में यहाँ बहुत सारे ऑर्डर्स हैं. आजकल सॉफ्टवेयर भी वैसे आ गए हैं जिनकी वजह से आप देख सकते हो इन क्लस्टर्स में यहाँ पर ऑर्डर्स हैं. एंड यू ऑब्वियसली नो कि अगर वहां पर जाकर के आप हिट करते हो और ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवा देते हो, देन देयर विल बी अ चेन रिएक्शन की और ज्यादा मूव आ जाएगा. बिकॉज अगेन लिक्विडिटी का खेल है सारा का सारा, डिमांड सप्लाई का खेल है. ठीक है, तो दिस थिंग इज डेफिनेटली गेटिंग इज बीइंग यूज्ड बाय बिग प्लेयर्स. तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली दिख रहा है हम लोग को. Got it. Cool. I think Vivek, we are almost at the end of our session. Cool. So I just want to say, I mean, really thank you for taking questions and answering them enthusiastically. I think yours has been a very inspirational journey. So would just like to wish you and your entire team and your colleagues at Witty Capital a very, very happy and prosperous year ahead. And we'll keep learning from you, and we'll keep seeing your tweets and reading your tweets. Cool. Thank you, Gordon. Thank you so much. Thank you everyone, and thank you guys. Thank you everyone for joining. Thank you very much. Bye.